Assalamu Aamer Alyzaee here. Now starting lecture 3 with fourth stream. So stay tuned. So इस स्लाइड में हम इलास्टिक और इनलास्टिक डिमांड के फोर राइट्स की बात करेंगे कि यूजिंग द फोर राइट्स ऑफ एक्यूरेट सेल फोरकास्टिंग टू ड्राइव 90% प्लस फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। तो उसके लिए कौन से चार एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं? द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट स्टेज, the right close date, and the right value. So one has to keep these four essentials in mind. So price elasticity formula की बात आती है। price elasticity डिमांड को हम देखते हैं, उसका फार्मूला क्या बनता है? परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। और प्राइस सप्लाई की बात हम करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। सो ये फार्मूला लगा के हम इलास्टिसिटी डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम परसेंटेज प्लास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी फार्मूला पीईडी फार्मूला को देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या बनता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम अगर एग्जांपल की शक्ल में देखें तो हमारे पास एग्जांपल में ये फार्मूला बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कि अगर आइसक्रीम की कौन आइसक्रीम है और उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है 2 रुपीज़ से 2.20 पैसा या $2 से वो $2.20 पे चली जाती है। सो अमाउंट यू बाय फॉल्स फ्रॉम 10 to 8 कॉन्स। कहने का मकसद है पहले आप 10 कॉन्स लेकर खाया करते थे, अब आप प्राइस बढ़ने की वजह से 8 खाएंगे, क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। सो लुकिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैविंग अ मिड पॉइंट फार्मूला। तो जब इसके अंदर हम प्राइस को इनपुट करेंगे फार्मूला में कि 10 - 8 डिवाइडेड बाय 10 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे ये परसेंटेज का फार्मूला निकलेगा। सो वी विल गेट द फिगर 2.32. So this is how it is calculated numerically and you can get the figure out of it and then you can evaluate कि ये इलास्टिक में जा रहा है या inelastic में जा रहा है। So इस स्लाइड में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट्स एंड परसेंटेज ऑफ इनकम, नेसेसिटी क्या है, टाइम क्या है, ब्रेथ ऑफ डेफिनेशन इसकी क्या बनती है। So substitution में क्या है कि the more substitutes, the higher the elasticity, as people can easily switch from one good to another. कि अगर उन्हें नेस्ले नहीं मिल रहा तो वो नीडो की तरफ चले जाएंगे, पेप्सी नहीं है तो कोक की तरफ चले जाएंगे, कोलगेट नहीं है तो स्पार्कल है, स्पार्कल नहीं है तो फॉरेंस है। So slight change in one particular item's price can move us to the other item's price. So it is easy to understand. Percentage of income, the higher the percentage of the product prices of the consumer income, the higher the elasticity, as people will be careful with purchasing the goods because of its cost. Cost matter या necessity. The more necessary a good is, the lower the elasticity, as people will buy it no matter the price, such as insulin, medicine, life-saving drugs, but you have to buy that. Time. The longer a price change holds, the higher the elasticity, as more people will stop determining the good. If you go to the supermarket and find that blueberries or strawberries have double the price, you will buy it because you need it this time. But next time you won't, unless the price drops back down again. कहने का मकसद है स्ट्रॉबेरीज है तो रेड स्नाइपर लेनी है, कोई ट्राउट फिश लेनी है, उसकी प्राइस आपकी रेंज में होगी तो आप लेंगे, लेकिन एक दफ़ा की डिमांड के लिए यू माइट बाय, लेकिन हर दफ़ा आप उसको लेने से गुरेज करेंगे। उसको टाइम मैटर्स, टाइम फैक्टर मैटर्स। Breadth of the definition, the broader the definition, the lower the elasticity. For example, McDonald's burger will have a relatively high elasticity, whereas good in general will have a extremely low elasticity. इसकी यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने कोट की है वो इलास्टिक डिमांड को देखते हुए कि अगर कोला आपका $1 पे है, सो इसका मतलब है कि यू विल बाय मोर, और अगर वो $3 पे चला गया, सो देन यू विल से जस्ट फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम, वी हैव अदर ऑप्शंस, शीज़ान है, नोरस है, रूह अफ़ज़ा है, यू विल लीव दैट। अब हम अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स इन नेचर ऑफ कमोडिटी मैटर्स, several uses of commodity, demand can be postponed or not, substitutes को देखना है, joint demand को देखना है, range of price को देखना है, income और money spent। So
इसके डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके इन एंड अराउंड आप वर्क करते हैं। इसको ग्राफिकली अगर देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वान्टिटी डिमांड आ रही है, 800,000 मेंशन हुआ हुआ है, और क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दिए, 800 से 1000 लीटर आप तक आप जा सकते हो, या 1000 रुपीज़ तक आप इन्वेस्टमेंट की बात, क्वांटिटी की बात करते हैं। जब रुपीज़ की बात करते हैं तो $2.75 और $2.5 आपके वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसको इसी तरह से लिया जा सकता है कि जब प्राइस पेट्रोल की 110 रुपये थी, जो यहाँ पे $2.75 एक्सप्लेन हो रही है, और अब 100 रुपये हो गई है 2.5, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे पर वीक के अंदर। कहने का मकसद है कि जब 110 रुपये पेट्रोल की प्राइस है, तो लुकिंग टू द पेट्रोल प्राइस यू विल डिसाइड कि एक ही दफ़ा मेट्रो जाना है या कैश एंड कैरी जाना है। वीक में एक ही मूवमेंट करेंगे और सारी चीज़ें एक ही जगह से नहीं कि मुख्तलिफ जगह पे ना जाया जाए और पेट्रोल को सेव किया जाए। जब प्राइस जब नीचे आ 100 पे 95 पे, सो यू कैन look at the shift over here. It means that you will prefer to buy stuff, but you can move 2 or 3 times in a week, क्योंकि अब आपके लिए money is not a problem. So this is how one can differentiate. So here one needs to brainstorm. So what is about the price elasticity of demand? So how many words you can see in it? How you can perceive there is a demand change, proportionate change, and products are coming in and increases of prices and revenues. So look for the other words as well, just to expand your vocabulary on price elasticity of demand. So इस लेक्चर में हम लोगों ने elasticity of demand को, वेरियस फॉर्म्स को और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया। जबकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी को डिमांड और उसकी डिमांड कर्व को डिटेल में देखेंगे। रिमेन स्टिक टू इट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।